जय जगन्नाथ वेलकम टू मेटसाई ओडिया समस्त को आज क्लास को स्वागत। आशा करछि समस्ते भलरे थिबो खुशी रे थिबो एवं दाना भली एक भीषण बात्यार मुकाबला पई निजको प्रस्तुत करी रखिथिबो। तो समस्ते शीघ्र शीघ्र जॉइन करि नियो जेमति हमें आज क्लास को एंजॉय करि परिबा। पिलाने कहि रखिया को चाहूची जे प्रत्येक दिन हमर जो क्लास रहउची 5:30 रु 6टा बेले हबो। बेले बेले 5:30 हो जाए पारे बेले बेले 6टा हो जाए पारे डिपेंड्स अपन माय टाइम। तो समय अनुसार मोर अवेलेबिलिटी को धरिके हमें निर्धारण करवा और समस्ते खूब शीघ्र जॉइन कर दियो। गुड मॉर्निंग विष्णु प्रिया प्रणाम समस्ते जॉइन कर दियो शीघ्र शीघ्र जॉइन करिया को। गुड मॉर्निंग सलमा सुश्री गुड मॉर्निंग ग्लोसी के ग्लोसी ग्लोसी के पिला माने आज तुम माने को पचारि भी कहिथिली राइट पचारि भी कहिथिली। सो पचारि भी प्रथम प्रश्न होची व्हाट इज द रिएक्टेंट used in Hofmann ammonolysis reaction। Hofmann ammonolysis reaction रे reagent कौन यूज करा जाए फटाफट आंसर दिया। Hofmann ammonolysis reaction रे reagent कौन यूज करा जाए what is the reagent used in Hofmann ammonolysis reaction। Hofmann ammonolysis reaction रे कौन reagent हिसाब रे यूज करा जाए। भल अच्छी वर्षा प्रणाम। एनीवन हॉफमैन एमोनोलिसिस रे रिएजेंट हिसाब रे कौन यूज करा जाए Cu2O विष्णुप्रिया करे रॉन्ग आंसर। NaOH सुश्री कले रॉन्ग आंसर। हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन रे रिएजेंट हिसाब रे कौन थाए व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड इन हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन। ओके Cu2O basically for synthesis of aniline ପାଇଁ Cu2O नोथिले थोरिया नो रॉन्ग आंसर। सो हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन रे हमर रिएक्टेंट रहउची कोन रिएक्टेंट इज amine ammonia or primary amine or secondary amine or tertiary amine reacts with the corresponding alkyl halide। So haloalkane plus ammonia or amine gives rise to 1 degree or 2 degree or 3 degree amine or quaternary salt। समस्त को आशा करछि मन पड़थिबो। नेक्स्ट आछि व्हाट इज मिंडियस रिएक्शन। मिंडियस रिएक्शन कोन थिला मिंडियस रिएक्शन कोन थिला कि कहि परिबो। अच्छा आमे एटा को नले गूगल मीट रे स्टार्ट करबा कि गूगल मीट रे सालो स्टार्ट द मीटिंग ऑन गूगल मीट सो दैट तुम माने एटा कहि परिबो ना एठी कंफर्ट रहउछि यू आर कंफर्ट इन दिस प्लेटफॉर्म और वी शैल स्टार्ट इन गूगल मीट रे जति कहबो गूगल मीट रे हम डिस्कशन टा स्टार्ट कर परिबा। ओके सो सुश्री काइंडली शेयर द लिंक इन द टेलीग्राम चैनल। ओके ओके ठीक अच्छे बढ़िया कथा सुश्री। ओके काइंडली शेयर द लिंक इन द टेलीग्राम चैनल। एठी ठीक अच्छी वर्षा। ओके यू कैन आल्सो आंसर एनीवेयर ठीक अच्छे तुम जे कोन जगह रे आंसर कर दे परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आछि जे हमरो मिंडियस रिएक्शन रे हमरो कोन थिला अल्कोहलिक अमीन नो मिंडियस रिएक्शन रे हमरो थिला अल्काइल नाइट्राइल राइट। अल्काइल नाइट्राइल को जेतबे हम रिडक्शन करबा in presence of reducing agents like N sodium ethanol or LiLH4 you will get corresponding amine। पिला माने टोटली रूप रे तमे खाता को बाहर करो आ टोटल रूप रे हमें रिवाइज करबा ठीक अछि। सो एटा संपूर्ण भाबरे हमें रिवाइज करबा तेनु समस्त खाता बाहर करो आ एटा डिस्कशन फास्ट पार्ट हमरो डिस्कशन रहइबो 3 रु 5 मिनिट हमें एग्जैक्टली विष्णुप्रिया ठीक कहलो। तेणु आम गूगल मीट रे लिंक स्टार्ट करुचे गूगल मीट रे आंसर दियो समस्ते जो माने भी गूगल मीट रे जॉइन करि पारछ गूगल मीट रे आंसर दियो
ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିହେବନି ଫର୍ ୟୋର କାଇଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆପ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଇନଫର୍ମ କରିହେଉଛି। ସରି ଫର୍ ଦିସ୍। ଓକେ, ସୋ ମିସ୍ ମାହି ମାନେ କିଏ? ମିସ୍ ମାହି ମାନେ ମିସ୍ ମାହି ଲିଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ, ଟୋଟାଲି ରୂପରେ ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କହିବନି ବର୍ଷା ଯେ ମୁଁ ରିଭାଇଜ କରିପାରୁନି, ରିଭାଇଜ କରିକି ହିଁ ଆସିବ। କାରଣ ବିନାଭ୍ୟାସେ ବିଷମ ବିଦ୍ୟା। ମୁଁ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଆନ୍ସର, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ଆଉ ତାର ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ବିନାଭ୍ୟାସେ ବିଷମ ବିଦ୍ୟା। ଟୋଟାଲି ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ଏଭଳିଆ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲି ସବୁ ପାଠର ମୂଳଦୁଆ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ଘଣ୍ଟାଏ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ରିଭାଇଜ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରିଭାଇଜ ଯଦି ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ରିଭାଇଜ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସଠୁ ରିଭାଇଜ କରିକି ଆସିଥିବ। ଇଭେନ୍ କ୍ଲାସ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଲା ମାନେ ତମେ ରିଭାଇଜ କରିଦେବ, ନହେଲେ କିଛି ମନେ ରହିବନି। ସବୁ କେବଳ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପଳେଇବ, ସବୁ ଭୁଲି ଭୁଲି ପଳେଇବ ବି। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ରିଭାଇଜ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ରିଆକ୍ସନ ଇଜ Hofmann bromamide reaction. Anyone who can say Hofmann bromamide reaction? Susri or Salma, if anyone of you can say Hofmann bromamide reaction, you are welcome. Susri এবং Salma লাইন রে অଛନ୍ତି, କିଏ କହିପାରିବ Hofmann bromamide reaction? Sir, ମୁଁ କହିବି। Yes, Susri କୁହ Hofmann bromamide reaction. The action of bromine in acid amide in alkaline solution produce amine containing less number of carbon atom. Very good. So this is an example of degradation reaction. ଆଉ Hofmann bromamide reaction ଜମା ଭୁଲିବନି। Hofmann bromamide reaction ର reaction ଟା କହିପାରିବ ସୁଶ୍ରୀ? reaction ଟା Again, କୁହ। RCONH2 plus Br2 in presence of NOS gives rise to RNH2 plus NaBr plus N2CO3 plus water. ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ହଫମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରୋମାମାଇଡ୍ ରିଆକ୍ସନ, ଯୋଉଟା ଏବେ ସୁଶ୍ରୀ କହିଲେ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ହଫମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରୋମାମାଇଡ୍ ରିଆକ୍ସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏ ଅନୁସାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ ଥିଲା। ହଫମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରୋମାମାଇଡ୍ ରିଆକ୍ସନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ, କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ରିଆକ୍ସନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ହଫମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରୋମାମାଇଡ୍ ରିଆକ୍ସନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ क्यूटियस रिएक्शन? क्यूटियस रिएक्शन कौन? क्यूटियस रिएक्शन कौन थिला? व्हाट इज क्यूटियस रिएक्शन? क्यूट थिला बोली कि लास्ट टाइम हम पढ़थिले। व्हाट इज क्यूटियस रिएक्शन? यस सुश्री को। Isocyanate when boiled with alkyl followed by hydrolysis process produce corresponding 1 degree amine or primary amine. Again पुणी उथर कहलो। Isocyanate when boiled with alkyl followed by hydrolysis process produce corresponding 1 degree amine. वेरी गुड। तो सियानाइट को आम कौन करचे? सियानाइट को आम रिएक्शन करके हमरा अमीन पाउचे। वेरी गुड। नेक्स्ट इज गार्बियल थालिमाइड सिंथेसिस। गार्बियल थालिमाइड सिंथेसिस जो माने भी हमरो मिड से ओडिया स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करछि, से प्लेटफॉर्म रो टिके टेलीग्राम रो जॉइन कर जियो गूगल मीट रे, तापरे डिस्कशन कर देले, रिवाइज सरीला हमें पुणी उतरे यूट्यूब क्लास को पळेबा। ठीक अछि, यूट्यूब रे एटा चलछि, लाइव रिकॉर्डिंग भी चलीछि, सो दैट अन्य पिला माने भी उपकृत हेबे, आ सेमानक पई भी रिवाइज हे जिवो। रिवीजन इज क्वाइट इंपोर्टेंट पिला माने, बारंबार कहूछि, कारण पाठ पढिबाटू बहुत इंपोर्टेंट होछि रिवाइज करबा। नहले सब पाठ पढि पढि जाइथिबा, पुणी उतरे भूली जिबा हमें सब। यस, को सुश्री जने हाथ टिपचन, अन्य माने के कहि परनांदी। ओके सुश्री को गार्बियल थालिमाइड सिंथेसिस। को सुश्री। Batalamide reacts with alkyl KOH to produce potassium batalamide, which further react with alkyl halide to iodide to produce N-alkyl batalamide, which undergoes hydrolysis to produce 1 degree amine.
ओके विष्णुप्रिया नेक्स्ट टाइम तो पढ़ी के आसीबो बहुत बढ़िया तो एठी हमर थिला थालिमाइड रिएक्ट करूची कहा सहित थालिमाइड रिएक्ट करथिला अल्कोहलिक aqueous के अल्कोहलिक के सहित रिएक्ट करिके कोन दोथिला ना करेस्पोंडिंग पोटासियम थालिमाइड दोथिला पोटासियम थालिमाइड फर्दर कोन करथिला ना अल्काइल आयोडाइड सहित रिएक्ट करिके हमको दोथिला एन अल्काइल थालिमाइड जोटा को हमें हाइड्रोलिसिस कले हमर प्राइमरी अमीन आ अन्य ये आसथिला अच्छा एटा को प्रकार रिएक्शन थिला म तुमको कहिथिली व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट थालिमाइड गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस एटा को प्रकार रिएक्शन वर्षा मु कहिथिली जे जो माने रिवाइज करि पारन मु पाठ पचारला माने खाता को उल्टाओ देखि देखि हो पछे को ये भी गोटे प्रकार रिवीजन पिला माने देखि देखि हो भी कहबा ये होची की प्रकार रिएक्शन ये होची न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी गुड नेक्स्ट हाउ कैन यू सिंथेसाइज अमीन फ्रॉम ग्रिग्नाइट रिएजेंट रो अमीन केमती प्रिपेयर करि परिबा हाउ कैन यू सिंथेसाइज अमीन फ्रॉम ग्रिग्नाइट रिएजेंट सलमा टू डू को हाउ कैन यू सिंथेसाइज अमीन फ्रॉम ग्रिग्नाइट रिएजेंट ओके सुश्रिंग को Grignard reagent undergoes reaction to chloronium produce corresponding 1 degree amine. वेरी गुड तो क्लोरोनियम से तो रिएक्ट करले हमारा 1 डिग्री अमीन पाई जाउछ लास्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू सिंथेसाइज अमीन फ्रॉम नाइट्रोअल्केन हाउ कैन यू सिंथेसाइज अमीन फ्रॉम नाइट्रोअल्केन सलमा को हाउ कैन यू सिंथेसाइज अमीन फ्रॉम नाइट्रोअल्केन ए सलमा टू डू को सर भलसे मने पड़नी एमिति नुआ ए विष्णुप्रिया आंसर कह देलेनी जे नाइट्रो अल्केन को रिडक्शन कले इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो अल्केन हो बा सियानाइड हो बा अमाइड हो तीनटी जाको जो तुम रिडक्शन करिवो यू कैन गेट अमीन ओके इन प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी कहि सालेनी हमरो ओके थैंक यू बर्तमान में जिबा आपको बा सॉरी यूट्यूब रे क्लास को फोकस करिया एटी हमरो क्वाइट रिवीजन हे गेला आमे एभला प्रत्येक दिन 5 ରୁ 7 मिनिट रिवाइज कर दोथिबा जदर हमरो सब मन रहि जो तापर एठी गोटो रिएक्शन को एठी कोन हबो फर्स्ट प्रोडक्ट 2 नंबर रो प्रोडक्ट उडा कोन हबो जल्दी को सर मीट जरी सिंचर कले भलो होंदा मीट रे एक्चुअली स्क्रीन शेयर कले एठी यूट्यूब रे स्लो हो जियो मा आउ किछि रीजन न तीन जगह जब साइमल्टेनियस होची यूट्यूब रे स्लो हो जियो ओके हो ठीक अछि तमने यूट्यूब को चली आस यू कैन प्लीज कम टू यूट्यूब चैनल को पळे आसिले भलो हबो आमे एप्लीकेशन आमे कि समय पे पचारिबा सेशन दा हमरो गूगल मीट रे रख परिबा जोटे रिवाइज पे जियो तापर यूट्यूब को पळे आसिले बेटर हबो ठीक अछि कारण दियाडे मैनेज कला बेले पड़े समस्या हो जाउची पड़े स्लो हो जाउची सिस्टम अनुसार ठीक अछि ओके तो हम देखिबा C2H5CN माने इथाइल नाइट्राइल और you can also say sorry ethyl cyanide or propyl nitrile ru kon paiba this is propanamine very good this one is propanamine plus what are the how kon side product हम किछि लेखिने okay very good next तापर कोन आसीबो तापर आसीबो प्रोपाइल then आसी butanamine or butylamine very good तापरे hexanamine next one is after hexanamine benzanamine or acetophenamine this one is aniline good morning Simran this one is aniline not benzamine aniline habo okay next from Grignard reagent भी हम देखिबा C2MgBr plus ClNH2 कोन दबो
एटा होची this one is ethyl magnesium bromide. Ethyl magnesium bromide when react with ethyl magnesium bromide when react with chloramine produces ethanamine, right? It will produce ethanamine. Susri, please come to YouTube platform को पळे आसो better हबो. यूट्यूब रे ही अछि अच्छा तुम डी जारे अछो ओके मु सेपट पळे आछी काइना मते एपट प्रॉब्लम होची ओके थैंक यू लीव द मीटिंग को एंड कर दियो प्लीज एंड द मीटिंग ओके आम एभलिया प्रत्येक दिन रिवाइज करिया पई आमे गूगल मीट रो सहारा नै परिबा जदर आमे भल भाबरे कहि परिबा कारण बहुत समय लागि जियो जदि आमे केवल यूट्यूब रे रिवाइज करिबा आ रिवीजन बहुत इंपोर्टेंट पिला माने पाठ पढिबाटू अधिक इंपोर्टेंट होची रिवीजन ठीक अछि C3H7 this one is NH2 that is propanamine plus MgCl2 right propanamine plus MgCl2 next one is C5H11 NH2 that is pentanamine plus MgCl2 next one is hexanamine right C6H13 hexanamine plus MgCl2 okay hexanamine plus MgCl2 magnesium chloride तापर reduction of amide थिला this one is एटा मन रखो एटा ना कोन हो ethanamide this one is ethanamide similarly एटा हो propanamide this one is propanamide okay ethanamide propanamide so further accordingly you will get the products like this one is CH3 CH2 NH2 that is ethanamine plus water very good ethanamine plus water and this one is propanamine plus water right this one is butanamine plus water प्रणाम सत्यजित वेरी गुड मॉर्निंग आज सत्यजित बहुत जल्दी आसी जाइछन्दी पाठ स्टार्ट हबा पर रिवीजन रे ही हमें अछु सत्यजित आसी गेलन बहुत बढ़िया this one is pentanamine plus water further hexanamine plus water heptanamine plus water then this one is benzanamine not aniline this one is benzanamine ठीक है एटा हम कहबा benzanamine or benzylamine this one is benzanamine plus water एटार ना हबो benzanamine not aniline you cannot get aniline by this method नेक्स्ट टाइम टू दीप्तिश्री जॉइन हबो क्लास 5:30 ରୁ 6ଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ डेली केतो फ्लक्चुएट करिवो पिला माने टाइम टिके फ्लक्चुएट करिवो कारण मोर काम सरीबा ऊपर डिपेंड करे 5:30 नले 6टा 5:30 ରୁ 6ଟା ଭିତରେ जेमतिरे स्टार्ट ହେଇଯିवो दिस इज आइथाइल आइसोसियानेट आसंता काली आमे क्लास करबानी कारण आसंता काली बहुत उडे जगह नेटवर्क इश्यू रहइबो बहुत जनगर जगह करंट कटि जीवो तेणु आसंता काली आमे क्लास करबानी आज संध्या वाले क्लास भी जेमती हमरा आप रे क्लास हबनी ठीक अछि सो दिस वन इज इथानामाइन किंतु आमे आज क्लास कर परिबा एटा केवल आइसो दिस इज वन इज क्यूटीएस रिएक्शन ओके दिस वन इज क्यूटीएस रिएक्शन विष्णुप्रिया this is Smith reaction carboxylic acid when react with hydroxylic acid so here you will get C2H5 NH2 C2H5 NH2 plus CO2 plus N2 this is also an example of degradation reaction further C3H7 NH2 propanamine plus CO2 plus N2 I'm not rewriting the name of these compounds this one is propanoic acid तो मैंने सबुडार ना लिखिबो
ठीक अच्छे दिस वन इज C4H9 NH2 पेंटानोइक एसिड रू आम पाइबा ब्यूटानामाइन एंड दिस वन इज हेक्सानोइक एसिड रू आम पाइबा पेंटानामाइन प्लस CO2 प्लस N2 एंड फर्दर ये आम कौन पाइबा दिस वन इज बेंजोइक एसिड को जो आम रिएक्ट करवा यही केस रे बेसिकली रिएक्शन टा एटा हबो कि नहीं कहि हबनी कारण मु एटा लिखि दी सत एई रिएक्शन देखिया दरकार गोटे मिनिट लेट मी चेक द रिएक्शन इवनिंग रे आउ गोटे नेले किछि विष्णुप्रिया किछि असुविधा होनतानी किंतु बहुत पिलांकर जगार असुविधा रहउची सेमानंकर प्रॉब्लम रहिबो नेटवर्क इश्यू रहिबो ना तेनु आमे सब पिलांको प्राधान्य देवा पई बोली कि आमे भलिया न माने क्लास न करिया पई पदक्षेप नेछु एटा ठीक अछि कि भूल अछि मते टिके चेक करिवार अछि जे आंसर कहीं ना एटा ही पारे रिएक्शन ही पारे न भी ही पारे ठीक अछि दिस रिएक्शन माइट बी पॉसिबल और नॉट so you can get the aniline right we are getting the aniline by this reaction yes this one is aniline ठीक अछि aniline पाइबा कहीं ना बेले बेले aryl ग्रुप गुडा को सहज रिएक्ट करननी तो जोड़ा जोड़ा करननी से गुडा को हम सिलेक्ट करी रखियो पड़ो तापर आछि हमर गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस रे हम ऑलरेडी देखि सारछे गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस कोन रहिछि ना tomorrow this one is thalamide again react with KOH and C3H7I that is um, C3H7I hele iti product कोन आसीबो C3H7 रे वाटर दवा को भूली जाइछि C3H7 NH2 that is butanamine plus thalic acid so plus thalic acid लिखि दोछि डायरेक्ट कहीं ना एते बड़ जिंस लिखिया अपेक्षा thalic acid लिखि देटा भलो butanamine similarly एटी भी कोन आसीबो ना this one is butanamine plus thalic acid आउ साइड प्रोडक्ट हिसाब रे आउरी कोन कोन साइड प्रोडक्ट बाहरता है आउरी साइड प्रोडक्ट हिसाब रे हमर बाहरता है गोटे होची वाटर आउट होची पोटेशियम आयोडाइड तो तुमे चाहिले एटी लिखि दी परिबो किंतु वाटर जेतु यूज अप होची तेनु हमें लिखिया दरकार नै पोटेशियम आयोडाइड चाहिले लिखि दी परिबो एटा पोटेशियम आयोडाइड एक्स्ट्रा हिसाब रे लिखि दी परिबो ठीक अछि बट न लिखले भी चलिबो सेमति किछि इम्पोर्टेंट दिस वन इज अगेन C5H11 NH2 रिमेंबर ए प्रोसेस रे तुम्हारा एनिलीन प्रिपेयर करी हबो नाही एनिलीन काहे कि प्रिपेयर करी हबनी कारण मु देखोजी को स्टेप रे असुविधा हबो बा हमें कोनोसी कार्बन जोगुडा को सेकेंडरी कार्बन थिबो जेमति कि CH3CH3 आइसोप्रोपाइल अमीन एभला भी प्रिपेयर कर परिबनी कारण ए मेथड रे तुम्हारा एटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेता आ एटा संपूर्ण भाबरे SN2 रिएक्शन देखेता है तो तेनु एटा पॉसिबल नुह जदि हम अन्य ग्रुप नउछ so C6H13 NH2 plus thalic acid plus Ki काहे कि पॉसिबल नुह देखो एठी तुमे माने जदि देखिबो पर्टिकुलरली ए जगह रे कोठी ए स्टेप जो रहिछि एठी हमर जतोले हालो अल्केन जतोले अल्काइल हैलाइड से तो रिएक्ट करछि ना एटा तुम्हारा बेसिकली SN2 रिएक्शन फॉलो करछि एठी रिएक्टिविटी रो ऑर्डर रहउछि SN2 कंप्लीटली SN1 हो नाही तो SN1 जेहेतु होउनी तेनु हमर एठे कोन होछि कार्बन माने कार्बन तुम्हारा एठी जो फॉर्म होछि कार्बोकेटायन एते सहज रे फॉर्म होउनी तो साइमल्टेनियसली अटैक करछि जेहेतु साइमल्टेनियसली अटैक करछि तेनु एटा SN2 मेकानिज्म होछि SN2 मेकानिज्म आवरो
आमे केवल और केवल 1 डिग्री अमीन पाउछे सेकेंडरी बा टर्शियरी बा एनिलीन भी आमे प्रोसेस रे पाई परिबा नाही कारण सहज रे बेंजीन रे अटैक करि परिबो नाही कि नाइट्रोजन ग्रुप ठीक अछि सो इट इज ऑल अबाउट द प्रीवियस सेशंस कौन कौन आम पढ़ी प्रथम आम रिवाइज करदे तार होमवर्क पार्ट भी करदे नेक्स्ट आम जीवा फिजिकल प्रॉपर्टीज सो तापर आम जीवा फिजिकल प्रॉपर्टीज कहीं तुम जान प्रत्येक चैप्टर रे फिजिकल प्रॉपर्टीज रही अच्छा पे तुम देवार्चन सार बोधे आप बीडीसी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड स्टार्ट कले इज इट राइट एम आई राइट बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड सार स्टार्ट करते बहुत बढ़िया कथा स्टेट जदि हम देखिबा फिजिकल स्टेट ओके फिजिकल स्टेट जदि हम देखिबा बेसिकली हमर जते सब 3 रु 11 जाए रहिसंती कार्बन सेगुडा लिक्विड आउ 1 रु 3 जो कार्बन रहिसंती 1 रु 3 माने CH3NH2 मिथानामाइन टू आरंभ करिकी को जाए ना प्रोपानामाइन जाए C3H7H2 एगुडा सब कोन होइतांती एगुडा सब गैस होइतांती पुनी प्रोपानामाइन टू आरंभ करिकी यूनिडेकानामाइन ऑनडेकानामाइन माने C11H23NH2 ओके नो इशू लक्ष्मीधर एबे ही आरंभ होला कह बोले बट रिवाइज होतिला तमे रिवीजन जॉइन कर परतंत तापरे C11H23NH2 onwards माने इटे C12H25NH2 onwards that is dodecamine onwards all are didecamine onwards all are solid okay तो फिजिकल स्टेट जो देखिबा धीरे धीरे कार्बन जते बढ़ी बढ़ी जाउची कोन ही जाउची हमारा लिक्विड गैस का लिक्विड ही बॉन्ड तार स्ट्रेंथ बढ़ी बढ़ी जाउची ठीक अछि देन हमारा ऑर्डर जदि हम देखिबा लोअर अमीन जति की रहिछि लोअर अमीन रो प्लीजेंट स्मेल अछि लोअर अमीन गुडा को अमोनिया भलिया बिहेव करंदी बा स्मेल करंदी लोअर अमीन लाइक यू कैन थिंक अप टू कार्बन 5 दे स्मेल लाइक अमोनिया अमोनिया भलिया माने स्मेल करंती गंध अमोनिया रो गंध भी भारी बाजे किंतु हायर अमीन गुडा को संपूर्ण भावे पच्चा माछ भली गंध होंदी हायर अमीन रो स्मेल गुडा को दे स्मेल लाइक फिश दे स्मेल लाइक फिश ठीक अछि लिकिंग फिश पच्चा माछ गंध होउची हले जानि दबो जे सेठी हायर अमीन अछि ठीक अछि पच्चा माछ माने हायर अमीन नेक्स्ट आछि हमारा 3 नंबर रोटेन फिश यस रोटेन फिश तापर आछि 3 नंबर आछि डेंसिटी जेते तुम्हारा कार्बन संख्या बढ़ी बढ़ी जीव डेंसिटी सेते बढ़ी बढ़ी जीव कारण मास बढ़िबो so higher the number of carbon atoms sorry higher the number of carbon atoms higher is the density तापर हम जीवा जे कंपेयर करिवा हमें जेति की पढिचे कोन कोन पढिचे हमें पढिचे एल्डिहाइड पढिचे अल्केन पढिचे सॉरी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल फिनोल ईथर अल्काइल हैलाइड ठीक अछि आ हमर एडे अमीन एमान को भीतर जदि हमें देखिबा यार को पाखर रहइबो आर को पाखर रहइबो डेंसिटी सॉरी डेंसिटी नो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी डिस्कस करबा डेंसिटी नो सॉल्युबिलिटी जो देखिबा सॉल्युबिलिटी गुडा को जनरली हम जो देखिबा माने लोअर members are soluble in water whereas higher members are less soluble in water so solubility लोअर अल्केन जेते बेला हम देखिबा लोअर अल्केन माने को गुडा को नाइक
like CH3NH2, ठीक अच्छे, or ethanamine like C2H5NH2, they can make bond with water. एमाने कौन कर पारंती ना वाटर सहित बॉन्ड कर पारंती, को प्रकार बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एमाने हाइड्रोजन बॉन्ड तैयारी कर पारंती विथ वाटर। ठीक अच्छे, जदि आम यहाँ को आउ टिके भल भाव लिखा NH2 को एभलिया आम लिखि दउछि। तो लोअर जते सब अमीन रही हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर पारंती, किंतु जेते सब जेते सब बढ़ी जाए कार्बन संख्या जो बढ़ी जाए हायर आल्केन से केस रे हाइड्रोजन बॉन्ड आउ स्ट्रॉन्ग हो पारे नाही, तो से भाया केस रे आउ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हुए नाही। तो ये हाइड्रोजन पुणी ये वाटर, अगेन ये हाइड्रोजन, दिस वन इज वाटर। तो ये तुम देखिपारछ जे लोअर अमीन गुड़ाक हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होची, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत भल होची लोअर अलिफेटिक अमीन रे, किंतु जेतेबेले हमर बढ़ी बढ़ी जाउची सेतेबेले कोन हो जाउची ना तमानकर सॉल्युबिलिटी कमी कमी जाउची, सेमानकर सॉल्युबिलिटी जनरली कमी कमी जाउची। सो हम लिखि दे परिवा lower amines are more soluble in water, are more soluble in water कौन पाई, due to formation of hydrogen bond। very good morning शुभम। but higher जेतोले हम देखिबा but the solubility decreases as the number of carbon atoms increases। नंबर ऑफ कार्बन आटम इंक्रीज हेले कौन हुए, पोलारिटी पार्टा कमी जाए, पोलारिटी कमी गले तुम्हारा वाटर सहित से बॉन्ड भी कमी जीवो, बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो एज द नंबर ऑफ कार्बन आटम्स इंक्रीजेस, कार्बन आटम जेते हमर इंक्रीज हे जीवो यार सॉल्युबिलिटी सेते कमी कमी जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन आछि, दाना याडे मेलिनी तार कना, ठीक अच्छे, माने दाना एबे जाई एबे एठी तार कौन सी इफेक्ट देखेनी, जदि च वर्षा टिके झिप 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 होछि, किंतु अन्य जगह गुडारे वर्षा गत काल आरंभ हेलानी, आ बोधे तमर सेपटे वर्षा आरंभ हेनी। आमे कंपेयर करबा जे अल्कोहल आ अमीन भितरे कोटा मोर सॉल्युबल, कोटा मोर सॉल्युबल बिटवीन अल्कोहल अमीन, अल्कोहल फिनोल इथर, ठीक अच्छे। तो एमान भितर सबुठु कोटा मोर सॉल्युबल इन वाटर, सबुठु मोर सॉल्युबल इन वाटर कोटा, तो हमारा क्वेश्चन रही which one is more soluble, which one is more soluble in water, alcohol or amine। नंबर ऑफ कार्बन किंतु समान रखिबो, पवन आ वर्षा बहुत जोर हेलानी। हाँ सत्यजित एरिया हूँ कहि सत्यजित एरिया हूँ जगतसिंहपुर। सत्यजित तमें इस मुहूर्त क्लास करने विरत रहा दरकार, कारण गोटे 2 ରୁ 3 दिन जाए करेन्ट भी न आसी पारे, तेणु बेसिकली यार किसी पदक्षेप नवा दरकार, ठीक अच्छे, जे इन्वर्टर रो कम यूज करवा दरकार, फैन को बहुत कम यूज करो, जो माने माने बात्या प्रभावित अंचल अछ जगतसिंहपुर बा हमर केन्द्रापड़ा बा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बेसिकली ये दुटा डिस्ट्रिक्ट रो पिला ही कहबी, ठीक अच्छे। तो से बहुत समस्या
तो से माने घरे जदि इन्वर्टर रही इन्वर्टर कम यूज करने मु रिकमेंड करी जे जिते पार कम यूज कर कारण करेन्ट बहुत दिन जाए भी न आसीपे जेहेतु आमर बर्तमान टीम ओडिशार ओड्राफ टीम हो बा ओडिशार आमर अन्य जो माने टीम अच्छा जो माने बेसिकली डिजास्टर टाइम रे आमको सहायता करछन्ती सेमाने बहुत जोरसोर ए वर्ष लागिछन्ती मे भी ठीक ठाक हो तथापि आम प्रिकसन हिसाब से कहबी जे जो मानकर घरे इन्वर्टर रही इन्वर्टर कम यूज कर जदि तुम करेन्ट चली जाऊँ घर तो पावर कट हो गला माने कम यूज कर आ जो गुडाक माने जो गुडाक फुल चार्ज करने कथा लाइक मोबाइल ये सब एगुडाक फुल चार्ज करके रखी था मोबाइल लैपटॉप जिते भी यूज करने कथा तार मिनिमाइज यूज कर टोटाली अधिक यूज कर नहीं ना तो वाटर रे कोडा मोर सल्युबल अल्कोहल कि अमीन जदि हम देखिबा अल्कोहल रे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड दबो कि अमीन रे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड दबो किए कहि परिबो कोडा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड थी थाए अल्कोहल और अमीन व्हिच वन हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल और अमीन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किए दे थाए अल्कोहल कि अमीन दे थाए सुश्री कहले अमीन कहेंगे एमती कहल सुश्री सत्यजित भी कहले आमीन किंतु लक्ष्मीधर कहते आमीन सिमरन कहते अल्कोहल आ ग्लोसी जी सी कहते अल्कोहल विष्णुप्रिया भी कहते अल्कोहल पिला माने आमे जानिचे जे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मुझे शॉर्टकट रे लिखुची गोटे पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दीट जगह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही ठीक अच्छे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हेटेरो आटम माने हमर एठी हेटेरो आटम माने कहबा हमें अल्कोहल रे O एवं अमीन रे N तो हेटेरो आटम रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कारण जिते मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम हेतिबो सेते स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड हेतिबो हबो ठीक अछि अल्कोहल रे भी दीटा हाइड्रोजन बॉन्ड हबो ठीक अछि अल्कोहल रे भी दीटा हाइड्रोजन बॉन्ड हबो लक्ष्मीधर अमीन रे भी दीटा हाइड्रोजन बॉन्ड हबो जदि हम देखिबा गोटे वाटर गोटे अमीन भितरे तो से अनुसार जदि हम देखिबा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कोडा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन व्हिच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन वेरी गुड नाइट्रोजन लक्ष्मीधर कहले नाइट्रोजन बहुत बढ़िया नाइट्रोजन आंसर देइचंदी लक्ष्मीधर थैंक यू पिला माने नाइट्रोजन जमा नुह ग्लोसी की सी मु ह करिया पर सी भी निज उत्तर जो थिबो बदली देउचंदी टोटली नुह नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जदि हम देखिबा लेफ्ट राइट पीरियोडिक टेबल रे जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमी थाए मु लक्ष्मीधर को बाहा माने मिछरे साबासी देली किंतु प्रकृत रे ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका नाइट्रोजन तुलना रे ठीक अछि मु केतेबेले कोन कहि दे पिला बुझी पारि दियंती नहीं कि बढ़िया तेणु आमर जो देखिबा ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका एज कंपेयर टू नाइट्रोजन तेणु स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किए दबो ऑक्सीजन दबो माने अल्कोहल तेणु सॉल्युबल किए मोर हबो अल्कोहल देन अमीन बुझियला सो आमे एटे लिखि दे परबा एटा आ लिखिया को जीवानी जे अल्कोहल रे मोर हाइड्रोजन बॉन्ड अछि सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरो आटम अछि तेणु ये मोर हाइड्रोजन बॉन्ड एते लिखिया दरकार नै आमे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड केवल लिखि देबा अल्कोहल पोजेस stronger hydrogen bond then amine hence it is more soluble in hence alcohol is more soluble in water एथिपाई कोन हला अल्कोहल डा मोर सॉल्युबल इन वाटर हला ठीक अछि इज इट क्लियर तापर हमें सॉल्युबिलिटी को रिलेट करिकी क्वेश्चन आसी पारे एग्जाम रे तापर सॉल्युबिलिटी पर नेक्स्ट हमें आसीबा बॉइलिंग पॉइंट
चार नंबर आछे हमर 4 नंबर हे गेला सॉल्युबिलिटी हम बेसिकली वाटर देखिले तार ऑपोजिट होची तुम्हारा सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेसिकली एटा हमें प्राय देखु ना हूं तापर आसीबा हम बॉइलिंग पॉइंट अच्छा बॉइलिंग पॉइंट जदि हम देखिबा एमाने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन अछि मु तीनटा मु नोची प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन RNH2 RNHR dash then RN R dash R double dash বা R dash only which one has more boiling point କାହାର boiling point ଅଧିକା boiling point କାହାର ଅଧିକା का କାହାର boiling point ଅଧିକା का ପିଲା କହି ଗୀତ ଗାଇଲେନି ଥରେ boiling point କାହାର ଅଧିକା ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ 1 डिग्री की 2 डिग्री की 3 डिग्री गेस एनीथिंग गेस करो तुक्का मारो ओके सुश्री कहले 3 डिग्री कारण कार्बन अधिका अछि बोली कि सुश्री कह देले ये भी गोटे रीजन कार्बन अधिका थाई पारे फास्ट सिमरन कहले फास्ट लक्ष्मीधर कहले फास्ट ओके तो 1 डिग्री ही सबुठ अधिका हबो रीजन कौन पाई बंटी आमर आड़े बात्या नाही किंतु जो माने मु कहबी बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा सॉरी तीनटा एरिया बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा आउ जगतसिंहपुर ए चारटा डिस्ट्रिक्ट रो पिला मानकु कहबी जे समस्ते निजर घरे जदि इन्वर्टर रहिछि तार यथोचित व्यवहार कर जेते पारिबो कम यूज कर सो जेते अधिका ब्रांचिंग बढ़िबो ना बॉइलिंग पॉइंट सेते जनरली कौन है जाए कमी जाए ब्रांचिंग जेते बढ़ी जीवो बॉइलिंग पॉइंट सेते कमी जीवो मन रखता ओ यू आर फ्रॉम केंद्रापड़ा बंटी ओके टेक केयर एंड हैव ए सेफ दाना इन दिस साइक्लोन सुपर साइक्लोन दाना रे तुम्हें सेफ रे रुह सुरक्षित रुह अन्य मानक सुरक्षित भी रुह खाओ तो 1 डिग्री अमीन कथा जदि हम देखिबा 1 डिग्री अमीन रे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड हे थाए प्रथम कथा ठीक अछि आउ आमे जदि यार जागा अनुसार देखिबा जागा बेसिकली ये करेनी आउ एठी नो हाइड्रोजन बॉन्ड न थाए किंतु एठे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड थाए सेकेंडरी रे बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ता का ऊपर डिपेंड करे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन योर हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक अछि किंतु मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द साइज मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द साइज तो एई अनुसार जदि हम देखिबा सबुठो अधिक हबो 1 डिग्री रे तापरे 2 डिग्री तापरे 3 डिग्री रे रीजन होची हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक अछि कार्बन जदि बा समान कार्बन रो भी भूमिका रहिछि कारण जेते अधिक कार्बन बढ़ी बढ़ी जीवो सेते कोन हे जीवो सेते तार बॉइलिंग पॉइंट कोन हे जीवो बॉइलिंग पॉइंट एठे कमी जीवो काहे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कमी जाए स्ट्रेंथ चिरंजीव कहले सर मु क्राश कोर्स रे भल मार्क रखिबी बहुत बढ़िया कथा तो मु जदि कहबी मिथानामाइन इथानामाइन प्रोपानामाइन ठीक अछि मिथानामाइन इथानामाइन प्रोपानामाइन तो मिथानामाइन इथानामाइन कथा जदि प्रोपानामाइन भी जदि कहबी बेसिकली मु कहन देखिबी जा बॉइलिंग पॉइंट कहार बर्तन फिजिकल प्रॉपर्टी सरी जीवो कि यस आज फिजिकल प्रॉपर्टी सरी जीवो डोंट वरी फिजिकल प्रॉपर्टी आज सरी जीवो सो जदि मु कहबी मिथानामाइन इथानामाइन प्रोपानामाइन बॉइलिंग पॉइंट हमर सबुठ अधिक हबो मिथानामाइन रो जदि च कोन रहिछि जदि च कार्बन संख्या अधिक रहिछि प्रोपानामाइन रो कार्बन संख्या प्रोपानामाइन रो अधिक रहिछि तथापि मिथानामाइन रे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट अधिक रहिबो रीजन कौन काहे कि एभले हला
कौन ପାଇଁ विष्णुप्रिया को अरे 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 ना एटा भूल मु कहदेली मिथाइल अमीन ना एटा से मुझे देखा पड़ा परा मु कही तो देली किंतु इथानामाइन और प्रोपानामाइन कथा देखिबा 1 डिग्री अमीन रे प्राय हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर थाए अप टू कार्बन 5 जाए स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड थाए तेणु एटा उल्टी गला एटा ड्यू टू हायर मास ठीक अछि हायर मास एटा कोन लोअर मास एटा मॉडरेट मास एडे डाटा रहउची जे इथानामाइन रो रहउची बॉइलिंग पॉइंट 36 ରୁ 37 डिग्री वरे मिथानामाइन रो चिरंजीव जदि तुमे क्रैश कोर्स रे केवल जॉइन करबा को चाहूचो किछि जमा किछि पढिन तुमको झाळ कठिन परिश्रम करिया पड़े ताहाले जाई कि भल मार्क आसीबो अदरवाइज जदि तुमे पास करिया को चाहूचो बा फर्स्ट डिवीजन होबा पई चाहूचो ताहाले ठीक अछि 3 मास पढले भी हे जाई पारे किंतु कठिन रु कठिन परिश्रम कले ही हे परिबो कारण देखो जणे पिला वर्ष तमाम पढिथिबो क्रैश कोर्स रे आउथरे सेही भलिया परिश्रम करिवो वरे तमे कोन करिवो वर्ष तमाम पढनथियो केवल 3 मास रे पढि दबो ताहाले कोन हबो दी जणु कंपेयर कला बेले जो पिला अधिक परिश्रम करथियो तो एडा होची हमर कोन this is directly proportional to so success is directly proportional to labor that to both hard labor and smart labor smart labor कोन ना तुमे केते पढी रिवाइज केते करूछ पढिबा पर रिवाइज करूछ प्लस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करूछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा आ रिवाइज करबा ए दिटा होची स्मार्ट लेबर हार्ड लेबर that is hard labor दीड जगह से तो important directly proportional ठीक अछि but more proportional to smart labor क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबा रिवाइज करबा कांसेप्ट क्लियर कला परे आ हार्ड लेबर से तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सक्सेस जदि लेबर कमी जीवो ताले से पड़े सक्सेस रेट भी कमी जीवो सो परसेंटेज दरकार हेले निहाती भाबे तुमको परिश्रम करिया को ही पड़िबो बिना परिश्रम किछि हबो नाही बाबा ठीक अछि परिश्रम न करिकि केवल दिवा स्वप्न देखि देबी मु आज हे जे ओली हबनी खाली क्रैश कोर्स रे जॉइन करिकि क्लास कला देखला आडू नथिबो एग्जाम देबा को देखला आडू नथिबो नोट पत्र पचला आडू किछि कहि पार नथिबो ताले दिवा स्वप्न देखिबा वृथा तेनु जदि स्वप्न देखुचो ताको साकार करिया पई एमिदी इच्छा हवा दरकार जे राति रे निद हबनी आम पिला माने राति रे सो नाहंदी सत कथा बहुत पिला माने हमरो मेडसाई ओडिया 12टा बेले सोचंती आउ सकाळ 4टा 5टा बेले उठचंदी मते फोन कर दो सर आपण क्लास करलेनी ता माने केते डेडिकेशन राति रे सोइला आडू आप रे क्लास मॉर्निंग रे उठिला आडू यूट्यूब क्लास ये होची डेडिकेशन आ दिन तमाम घंटे 1.5 घंटा रेस्ट नोचंदी तथापि तो दिन रे 5-6 घंटा सोइबा ही जानिचंदी जहा आ अन्य खाइबा पीबा एपट सेपट ही गला परे केवल पढ़ुचंदी प्रैक्टिस करूचंदी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस को बेसी फोकस करिवा दरकार तो इट डिपेंड्स अपॉन यू तम मेमोरी पावर आ तुमरो केते तुमे से जिंस को सीरियसली नउछ ठीक अछि हो तो एटा रीजन एतिकी लिखि देली मु आउ डिटेल्स रे लेखुनी बॉइलिंग पॉइंट जदि हम देखियो आ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भितरे 1 डिग्री रो मोर बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री और 3 डिग्री अनुसार किंतु जदि हम देखिबा
प्राइमरी अमीन भितर जदि आम कंपेयर करवा कार्बन संख्या जिते बढ़ी बढ़ी जीव सेते कौन हो तार मास बढ़ी बढ़ी जीव आते तार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ी बढ़ी जीव डेली केते आवार नुह डेली केते समय मु समय नष्ट न करी डेली ये को आमे कहू आमे जीरो वेस्टेज ऑफ टाइम माने टाइम को संपूर्ण भाव में वेस्ट करने को हबनी तो तुम मैंने जानिच वेस्टेज केमती करा जाए टाइम आ वेस्टेज केमती करा जाए तो से अनुसार पढ़ले हो गला जीरो वेस्टेज ऑफ टाइम ठीक अच्छे ZWT जीरो वेस्टेज ऑफ टाइम ZTW जीरो टाइम वेस्टेज वेस्ट टोटाली टाइम वेस्ट करने को हबनी गोटे गोटे मिनिट भी भाविया पड़ो पढ़ा पड़ो ताहले जाइए किछि परिबो टाइम वेस्ट हबा को हबो नाही डेली केते घंटा पढ़ी नुह डेली मु केते समय याड साइड टाइम दउछि देखिया पड़ियो सेई टाइमटा बेसिकली मोर याड साइड जो हो जाउछि पढ़ा छाड़ी की सेटा जदी होछि 8 घंटा रो अधिका हबा को हबो नाही ताडो अधिका हबो ता माने निहाती एमिति चिरंजीव जमा नुह मार्क आसीबनी मु जमा मु कहबिनी देखो मोर गोटे स्टूडेंट थिला से वर्ष तमाम पढ़ु नथिला मु निजे जानिछि किंतु क्राश कोर्स टाइम रे एमिति लगन देगी पढ़िला जे क्राश कोर्स टाइम रे एमिति लगन देगी पढ़िला प्रत्येक एग्जाम को टॉप कला और लास्ट को एग्जाम रे बोधे 71% रखथिला बोर्ड रे ठीक अछि देखिबा हम प्रॉपर्टी मझिरे बेसी डिस्कशन हो जाउछि तो ये गला हमर बॉइलिंग पॉइंट पर हम आछि तापर आछि हमर कोन ना लास्ट को हमर आछि डाइपोल मोमेंट ठीक अच्छे डाइपोल मोमेंट जोटा कि पोलारिटी को रिलेट करिक अछि डाइपोल मोमेंट सो 6 नंबर प्रॉपर्टी आछि हमर डाइपोल मोमेंट और नेक्स्ट क्लास माने काली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़िबा आसंता काली तो हबनी डे आफ्टर टुमारो माने पहर दिन कारण आसंता काली बात्या प्रभाव रही जो बहुत गुड़े जगह पावर कट थी तेणु बहुत पिला आमर पढ़ार वंचित हो रही थे तेणु से गोटे दिन ऑफ करने को बाध्य हो डायपोल मोमेंट कथा जब हम देखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहार डायपोल मोमेंट अधिका हम प्राइमरी अच्छी सेकेंडरी अच्छी टर्शियरी अच्छी डायपोल मोमेंट कहार अधिका हम व्हिच वन इज मोर पोलार व्हिच वन इज मोर पोलार किए obviously primary then secondary then tertiary so it was more polar कहीं कारण ये तुम जब हम देखा गोटे नाइट्रोजन आ गोटे कार्बन रही so it one is more polar it one is less polar रीजन कौन पाई कारण कार्बन संख्या बढ़ी बढ़ी जाउछि चिरंजीव मोटिव हेलो ना डिमोटिव हो जाउछ मो कथारु चिरंजीव 75% दरकार माने पूरा जोर से पढ़ा पड़ो सबकि संभव बाबा गोटे दिन रे भी पाठ पढ़ी पिला मार्क आनी पारे वर्ष तमाम पढ़ी भी मार्क आनी पारे किंतु निर्भर करे गोटे दिन तुम्हें कौ भाया पढ़ुच गोटे दिन पढ़ी एमती मुझे कहीदेली कि वास्तव सत जानी जे गोटे पिला गोटे दिन पढ़दे माने एमती सी वर्ष तमाम पढ़ी क्राश कोर्स टाइम रे भी पढ़ी शेष में लास्ट 10-15 दिन पढ़ी पार न कौन कारण कि गोटे दिन एग्जाम पूर्व दिन पढ़ी भी भल मार्क आनी पारे परसेंटेज कि पढ़ा को पड़ो परिश्रम फल ही मिल तेणु आमको बहुत परिश्रम करा पड़ो 12 घंटा तो आमको डेडिकेटेडली टाइम ही दबा पड़ो खास कर क्लास 12 माने 12 घंटा 10th माने 10 घंटा 10th क्लास 10 घंटा 12th क्लास 12 घंटा तुम के टाइम दौच तुम उपर निर्भर करे मुझे नहीं गोटे ये करी डिमोटिवेट हुअनी बर्तमान टू मोटिवेट हुआ सेल्फ मोटिवेशन इज क्वाइट इंपोर्टेंट देन डिमोटिवेशन निजको निजे संभाल आ जो चारियाड जो मन को ये कर गोटे वीडियो नहीं आनी ठीक अच्छे हाँ +3 रे फुल मस्ती एक्जाक्ट +3 रे 3 घंटा भी पिला पढ़ुना ठीक कथा कहला सुश्री सो प्राइमरी अमीन माने मोर पोलार सेकेंडरी अमीन माने लेस पोलार और थर्ड टर्शियरी माने लीस्ट पोलार से डायपोल मोमेंट जो देखा प्राइमरी अधिका तापर आम नेक्स्ट आउट जा CH3NH2 C2H5NH2 C3H7NH2
କାହାର ପୋଲାରିଟି ସବୁଠୁ ଅଧିକା କହିଲ? ପୋଲାରିଟି କାହାର ଅଧିକା? obviously प्राइमरी अमीन, तापर सेकेंडरी, तापर टर्शियरी। फास्ट वेरी गुड, निश्चय भल मार्क आसीबो चिरंजीव एबेठु ही ये करो। ओके नीट जेई, नीट माने सत्यजित जेई मेन माने जीवन सारा, नीट माने 18 घंटा। ओके सो 1 डिग्री सबुठ अधिका हबो ड्यू टू कोन पई रीजन? कारण एठी जदि हम देखिबा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन रे प्राइमरी अमीन रो मोर रहिछि डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लेस पोलारिटी, कारण कार्बन संख्या लेस रहिछि। सॉरी मोर पोलार लेस नंबर ऑफ कार्बन जोगु बा अल्काइल ग्रुप लेस नंबर ऑफ आर ग्रुप, किंतु आर तो न लेस नंबर ऑफ कार्बन, मोलार मास जमा पड़िबो नाही। एठी मोर, एठी कोन होछि मोर नंबर ऑफ कार्बन माने नॉन पोलर पार्ट बेसी, तेणु एटा लीस्ट पोलर। एटा हेजिबो मॉडरेट पोलर। चिरंजीव मु सेही भलिया कहि परिबेनी जे तमे वर्ष तमाम पढ़िन आ 3 मासरे 90% आनी देबो, मु कहि परिबेनी सत कथा, कारण मु वास्तवता को नेकी बंचे। एमिति किछि लोक थांती वीडियो बनै दियंती कोन पई? सस्ता टीआरपी नबा पई, जे अधिक रु अधिक पिला जेमि देखिबे आउ कहिबे जे 90% आनी देबा 3 मासरे 10 दिन रे परिश्रम करिकि 90%। एवला सस्ता टीआरपी बनेबा पई, सस्ता वीडियो बनेबा पई मु नुह। वास्तविकता को देखिकि चलिया को पड़े। 90% जो माने वर्ष तमाम डिमोटिवेट हवा कथा कहूनी, वर्ष तमाम जदि पढ़ी नथिलो कुआड जाइथिलो? एटा कोन +2 सेकेंड इयर एग्जाम, एटा 10 9 10th क्लास नुह। वर्ष तमाम जदि पढ़ी न ताल 90% आनिवार स्वप्न भूली जाओ। हाँ फर्स्ट डिवीजन हे परिबो, वर्ष तमाम न पढ़थिले फर्स्ट डिवीजन हे परिबो। टोटली पढ़ी नथिबो, बही उल्टी नथिबो, पाठ कोन जानि नथिबो, से पिला केमि 90% आनिबो कहलो? बट 75% बा 80% आनिबा भी हे परिबो, डिपेंड करे। 90% मु जमा कहबिनी। 90% बहुत कम पिला आनी थांदी 12th रे, आ सेमानकर डेडिकेशन डे 1 रु जाना पड़थाय, क्लास 12 रु जाना पड़ जाय। जेमिति हमर एठी पेज रे किछि पिला माने अछंदी पढुछंदी, सेथरु आमे जानि परिछु, किछि पिला को आमे नजर करि परिछु। तो जदि तुमे डे 1 रु पढ़ा पढ़ी आरंभ करि नथिबो ताले मझिरे एपट सेपट हे जाय, सेडा अलग कथा। किंतु डे 1 रु तमे पाठ जमा जानि नथिबो, नोट तमरो कर नथिबो, नोट पढ़ी नथिबो, सेठी 90% आनियाटा भारी टफ हे जो। क्वाइट इजी, नॉट इजी, टफ रहिबो, बट करिया को पड़िबो। परिश्रम छडा अन्य किछि उपाय नै। ठीक अछि, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड लेबर। हार्ड लेबर रो कोनोसी सब्स्टिट्यूशन नाही, एटा समस्त बुझिबा दरकार। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास। अच्छा चिरंजीव, देह खराब थिला, कोन करिबा बाबा? जीवन रे एमिति भी हुए बेले बेले सिचुएशन, देह खराब थाए, ओह बहुत खराब लागला। किछि किछि पिला मु देखिछि, चिरंजीव भगवान करंतो सेमति हेले भगवान तुम सहित अछन मु कहबी। जेमति हम भितरे मोटिव, देह खराब थिला जदि ताले फोकस कर, पुनी आउथरे आगु बढ़िबो। किछि किछि पिला अछंदी जमा सेमाने कोन करंती जे वर्ष तमाम पढ़ी नथांदी, केवल आ केवल नेग्लेक्ट जोगु मते भीषण राग माडे। जो पिला बहुत नेग्लेक्ट करिकि जीवनटा को छाडी दियंती, नेग्लेक्ट कर दियंती माने कोन? मोबाइल घांटंती, खेलंती, बुलंती, टोटल टू साइंस रे एमिति पिला बहुत कम देखिया को मिले, जे माने इभलिया नेग्लेक्ट थांदी। आ बहुत भलो पिला अछंती, अल्प किछि करि जानि, बहुत भलो पिला अछंती जो माने बहुत डेडिकेटेडली पढ़ंती। जेमति चिरंजीव, चिरंजीव को प्रॉब्लम ही जाइथिला, किंतु सी पुणी मुंड टेकिचंदी। चिरंजीव रेगुलर क्लास करो, यूट्यूब रे हमर होची, प्लस तमे नोट सब चैप्टर कलेक्ट करो, पाठ पढ़ो, क्रैश कोर्स रे डेली क्लास करो, सब एग्जाम को अपियर करो, सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आस।
पूरा जोरसोर लगी जाओ जमी तुम भलरू भल मार्क आनीपर तुमको मुझे कौच 90% आनीपर कि ये कि 90% भी हो जाए डिपेंड्स अपन यू मु कौन सी ये कथा कहबी कि 90% मु आशा दिवा स्वप्न देखा छाड़ दियो 75% 80% ठीक अच्छे आसज सत कथा यहाँ वास्तव कथा थैंक यू ऑल ऑफ यू मोटिवेटेड समस्त कौच मोटिवेटेड हो पढ़ा को फोकस कर ठीक अच्छे निश्चय सफलता निश्चय मिल जो तुम्हें निश्चय परिश्रम कर सफलता निश्चय मिल सफलता छाड़ी जीव ही ना कुआड़े ठीक अच्छे थैंक यू फॉर जॉइनिंग।